Started my career only with a film that was way ahead of its time, which was Rocket Singh. मैं तो सर से पैर तक ऊपर से मतलब आई एम एवरी इंच आई एम मिडिल क्लास फैमिली। जैद जब रात के 10:30 बजे फुटबॉल खेलने जाते हैं ना, उस वक्त आग दिखा देती हूँ। उस वक्त वो समझ भी जाते हैं कि हाँ डेट हो रहा है, मामला है। मिट्टी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मुझे गुप्ता जी को ज्यादा अच्छी लगती। Hi Gohar, hi Sharib, welcome to हाय Pink. नैनिका, थैंक यू। How are you guys doing? I just realized zombie on the screen right now. But we're doing good because we're excited about Sorry Bhai Sahab. So how has it been to shoot, taking a break in the pandemic and then now we are resuming back to work, but now we know there's another virus that might enter our lives soon. I am not concentrating on any such virus. I am tired of it. I feel like अभी सोचना है कि बस तब ठीक है, because वो सोच से ही थोड़ा चेंज होगा, वरना तो ये उसमें हर 3 महीने बाद एक नया वेरिएंट आ जाएगा and then we'll be like अरे फिर फंस गए. So as long as you're vaccinated and you're careful, I'm going to say there is no vaccine. I mean, there is no virus. I'm tired of it. No more new. Right. Everybody is, and we don't want more lockdowns, right? So coming to Sorry Bhai Sahab. So tell us a little bit about the plot or the way you see the story. We know it's a middle class story of aspirations between a couple and the desires that a middle class family has. How has the experience for you guys been with it? Starting with Sharib. First of all, what drew me towards the film was its solid script and the way it's written, the amazing humor it has, and without going over the top or taking the help of slapstick, the easy way, going with slapstick humor. वो नहीं है, बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है, बहुत ही मतलब they have tried to show the frustrations of a middle class family along with the aspirations, along with their dreams. तो वो सब कुछ मतलब everything has been put together so beautifully by the writers and directors Sumit and Suman. कि मतलब I immediately after I finished reading the script I immediately said yes to it. And Gohar के साथ में काम किया मैंने पहली बार और I had a great time और मतलब I always I really admire her work. मैंने Rocket Scene पता नहीं कितनी बार देखी है और and she stands out like मतलब क्या बताऊं मैं, इतना कमाल परफॉर्मेंस है उनका उसमें, so real, so powerful. Brilliant she is in Rocket Scene. We can see Gohar over there blushing and being happy over there, the co-star doing so much of tareef here. I have mutual feelings about that actually, because I absolutely love the talent that Sharib has and how easily he gets into a character and how convincingly he delivers it. So one of the key factors of me doing Sorry Bhai Sahab was that I would be doing it with Sharib, and it was a fab experience. Coming to Mr. and Mrs. Gupta. So so tell us their funny tale, and we see picture गाड़ी के पीछे सब भाग रहे हैं. गाड़ी क्यों चाहिए गौहर आपको? गाड़ी किसको नहीं चाहिए यार, मिडिल क्लास बच्ची है, कितने काम होते हैं उसको सब्जी भी लेने जाना होता है, उसको बच्चे को स्कूल भी ड्रॉप करने जाना होता है, उसे अपने किटी पार्टी में लोगों को जाके थोड़े बहुत 1 घंटा बिता के फिर घर आके खाना भी पकाना होता है. तो इतनी सारी उसमें कितने फायदे होते हैं गाड़ी होने के, आप बताइए. तो इसीलिए तो गाड़ी चाहिए उसको, और गाड़ी तो ऑलरेडी वो अपने किटी ग्रुप में बोल चुकी है कि गाड़ी लेना है. अब वो क्यों होता है, कैसे नहीं आती है, वो सब देखते हैं कि क्या होता है 16 दिसंबर को Sorry Bhai Sahab. We are absolutely waiting for it. Sorry Bhai Sahab looks like a really funny scene to us and humorous. So again, Gohar and Sharib, जैसे we've seen कि this element of the middle class, it is so relatable that nowadays more and more movies are coming on it. Be it the A-listers also for picking up scripts which relate to the lives of common man. And people are actually going to the theater, and even on OTT platforms, we are seeing these films like these, which are more relatable, which work on this middle class theme. They are working. What is your take on that? I just started my career only with a film that was way ahead of its time, which was Rocket Singh, which was, I think, one of the first few films that were made on, characters that matter in the real world. And I think kudos to Ranbir Kapoor to choose a script like that 12 years ago.
and I think that I've always been drawn to scripts like that. So for me, these relatable films are the things that work the most with audience even today. Like right now, I think जब रॉकेट सिंह आई थी उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था ऐसी फिल्म्स के लिए. आज अगर रॉकेट सिंह आती तो शायद सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म होती. तो I think I've always loved films that you can relate to. And Sharib, we've seen those characters only. या मुझे तो मतलब मैं तो सर से पैर तक ऊपर से मतलब I am every inch a middle class family. मतलब middle class person. और मतलब क्या कहते हैं उसको, मुझे वैसी बहुत पसंद है जो इस सेटअप में जो फिल्में बनती हैं और अगर अच्छे से बनाई गई होती हैं. Do you think with the advent of OTT and COVID coming in, fortunately, the chance for upcoming actors, upcoming writers, and more stories which should be said, they've got a chance to finally be on the platform that they should be? Yeah, definitely. There's so much more work for all of us, not just actors. I think actors get the forefront of things, but technicians, script writers, directors, production houses. There's so much content to create now for the audience. So it's a win-win for everybody. I think the entire industry, and that's got renowned names in the industry like yourself. They coming to genres like short films. What is it indicative of? Because generally, people have a mindset that, मैं तो इतना बड़ा star हूँ, I'm going to just hit the big screen, or, or just a web series. Short films are not for me. Do you think it's changing over time? I think the idea of short films has changed over time. I think people earlier thought कि इसमें पैसे हैं, जल्दी से कंटेंट क्रिएट हो जाता है तो हम शॉर्ट फिल्म बना देते हैं. ऐसा नहीं है. Right now, full films are being made in the short film format, especially the kind of films I've done. I've done a film called Ek Dopahr with Huma Qureshi. That was a very interesting film. Then I've done a film called Peanut Butter, jahan par again it was a very challenging role for me, and I actually won the best actress at IFTA for that. So for me it's very interesting. अगर आप एक लंबी सी कहानी एक छोटे टाइम में बता पाए convincingly, and you get the audience hooked onto that, then you won, right? So that's all you need in entertainment. Sharib, also congratulations on your Filmfare for your mind-blowing character in Family Man 2. And thank you. Thank you so much, Nayanika. How does that feel, by the way? Dream come true. Yeah. मतलब इतनी बार मतलब but Filmfare has so much of nostalgia attached to it, क्योंकि हम बचपन से मतलब वो हम देखते आए हैं. और मैं इनफैक्ट एक बार कॉलेज में था और किसी दोस्त ने 2 पासेस अरेंज किए फिल्म फेयर अटेंड करने के लिए, और पासेस 2 थे और दोस्त 3 थे हम. तो मैंने कुर्बानी दी थी उस वक्त. और बहुत अफसोस हुआ था. और आज जब मतलब उसी ब्लैक लेडी को जब हम हाथ में मतलब जब मैंने पहली बार लिया तो वो एक शेर है ना कि तेरा हाथ में आ गया और चिराग राह में चल गए. Wow, that's great, Sharib. Good to hear that. आपका Instagram is very happening. Like, anybody can have any update. गौहर की जिंदगी में क्या चल रहा है? What is up on her reel, and it's so colorful and happening. How do you manage your Instagram so well? I have a husband who's a social media type. Yeah. Actually, पहले मेरा social media accounts थे. I was more active on Twitter because I used to give my views and stuff like that. Instagram was okay, a happy place for me. Yeah. But once I met him, he's like, you have so much in you, you can just kill it on social media. And that's how I got inspired because of him. And he really helps me with a team that, can edit stuff for me, and, content creation becomes easier. Yeah. And I that now wherever I go, all I hear is your Instagram is great. So I'm like, yay. Super. How did the role of J.K. Talpade actually change your life? Change क्या मतलब पूरी तरह से 360 डिग्री एक टर्न मारा मेरी लाइफ ने. And the kind of love I've received for JK is unbelievable for me. And especially when the second season started streaming, so it went on another level. और जो लोगों ने मतलब प्यार दिया है और जो रिस्पेक्ट दी है, and the kind of love that's
the praise being showered on that character. Now we have a fun rapid fire section for plan for you guys, where we want you to answer as Mr. and Mrs. Gupta. Okay. Right. So okay, you will have to answer for each other. Okay. So Mr. and Mrs. Gupta, खाने में एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है? खाने में Yeah. गुप्ता जी को तो भिंडी पसंद है, बटर मसाला पसंद है। वो उन्हें भिंडी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मुझे गुप्ता जी को ज्यादा अच्छी लगती है। गुप्ता जी क्यों? गुप्ता जी को अच्छी लगती है। हाँ, तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं या सो जाते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता जी क्या करते हैं? कॉलोनी में वॉक करने जाते हैं। ये बताइए मिस्टर गुप्ता जी कि मिसेस गुप्ता के पास कौन सी ज्वेलरी है जो नहीं है? क्या आप रोज कहती रहते हैं कि आज ये रिंग दिला दो, ये सेट दिला दो, क्या होता रहता है घर में? उनके पास एक वो ऐसा आता है ना, बड़ा वाला पूरा का पूरा, और उसके आगे नीचे ऐसा एक नवरत्न। बड़ा सा, हाँ वो नहीं है उनके पास। और मैं कम से कम 2 साल हो गया एक पाई जुटा रहा हूँ उसी के लिए। आई होप कि अगले 2 साल में मैं वो पूरी तरीके से उन्हें खरीद के दे दूँ। 2 साल में नवरत्न हार लाओगे तो गाड़ी कब लाओगे? गुप्ता जी को गाड़ी तो अभी चाहिए। हाँ, गाड़ी तो अभी चाहिए। गाड़ी का तो काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। एक तो इनको अगर मैं कभी कमला कह देता हूँ तो ये बहुत नाराज हो जाती है। बहुत नाराज होते हैं। हाँ, इनको किमी कहलाना चाहिए। लोग इन्हें पसंद है अपना निकनेम किमी। किटी पार्टी में भी किमी के नाम से। हाँ, किटी पार्टी में किमी पार्टी हो जाती है पूरी। ये हूँ मैं, किमी। कितना अटैचमेंट है मिसेस गुप्ता जी आपको किटी पार्टियों से? बहुत। अब देखिए पड़ता है, वो बच्ची का ध्यान रखना पड़ता है। मिस्टर गुप्ता आते हैं, उनके बाद उनको खाना परोसो, फिर उनके सुबह उनका टिफिन बनाओ। तो बीच में जब किट्टी पार्टी का टाइम मिलता है, वही बस 2 मिनट अपने आप के लिए ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम जी रहे हैं। गौहर इज इन फुल ऑन मिसेस गुप्ता रोल राइट नाउ। हाँ। अच्छा मिसेस गुप्ता, ये बताइए मिसेस गुप्ता को गाड़ी क्यों चाहिए भाई? इतनी क्यों जिद लगा रखी है? वो तो आप बता भाई 16 दिसंबर को देखनी पड़ेगी ना। सॉरी हाँ, किटी पार्टी में फ्लॉन्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए ये तो बताइए। नहीं तो जो मिस्टर उन्हें बस नई गाड़ी चाहिए, पुरानी हो गई है। हाँ, नई गाड़ी चाहिए और उसमें वो ना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, ब्लूटूथ। ये बताइए गुप्ता जी, आप मिसेस गुप्ता की कौन सी बात से सबसे ज्यादा डरते हैं? कौन सी बात से सबसे ज्यादा डरता हूँ? हाँ जी। उनकी वो जब आंखें ऐसी बड़ी कर देती है, मैं वहीं खत्म हो जाता हूँ। अब मुझे पता था यही कहोगे। तो उन्हें बात करने की जरूरत नहीं होती, वो निगाहों में खत्म कर देती है। क्या बात है। अब ये वाला आपने मिस्टर और मिसेस गुप्ता के लिए तो जवाब दे दिया। अब यही बताइए कि अपनी रियल स्पाउसेस से आखिर आप लोग किस बात से डरते हैं? हाँ यार, डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मतलब वो तो क्या कहेंगे उनको, वो मुझे मतलब एकदम खुला छोड़ देती है। भाई तेरे को जो करना है कर, बिंदास। क्या बात है। और गौहर, आपका क्या कहना है? सेम, वी लेट ईच अदर बी। हम एक दूसरे से डरते नहीं है बिल्कुल भी। कोई ना कोई तो बात होगी जिसमें से आंख दिखाने का जरूर मन करता होगा। जैद जब रात के 10:30 बजे फुटबॉल खेलने जाते हैं ना, उस वक्त आंख दिखा देती हूँ। उस वक्त वो समझ भी जाते हैं कि हाँ लेट हो रहा है मामला, इतना लेट। ऑलराइट। मैं जब एक एपिसोड और रात को देखने के लिए जब मैं बैठ जाता हूँ, तब जब आगे जब चेहरा दिखाते हैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने हमारी नींद उड़ा रखी है, लेकिन आप ही लोगों को क्रेडिट दिया जाता है। आप इतने अमेजिंग शोज बनाते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। वी गेट हुक्ड। थैंक यू सो मच Nayanika. So with that, I would wrap up the interview. I hope you guys had fun. I had a blast asking you these questions, and I really loved your quirky replies. Thank you. Same एकदम। मजा आया। Sorry भाई साहब, on Amazon Mini TV on 16 December. Bye.